Believe me, if you help someone or if you do something for needy people, you will become a proper human. Your soul will automatically purify it because humanity play a big role on this earth, not religion. Don't calculate yourself as a Muslim, Hindu, Isai, Yehudi. Just calculate yourself in a column of religion, that is humanity. If you follow that line, then earth will become heaven. Hello, ladies and gentlemen. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam. This is Amit Kapoor. Today I'm going to talk about Virgo Ascendants June 2021 monthly prediction. You know very well my old prediction are based on your ascendant sign, nothing to do with your zodiac sign, nothing to do with your sun sign. Just keep your ascendant sign in your mind and listen my video. You will definitely get some information related to your upcoming month June 2021. So first of all, your ascendant lord transit in your 10th house from 26th of May 2021 to 7th of July 2021. Whole month June 2021, Mercury is in your 10th house, which is one of the ultimate placement of your ascendant slot by the grace of God. And Sun is also joined Mercury from 15th June, and Jupiter is going to retrograde from 20th June 2021. This whole combinations as per your birth chart, because Mercury, your ascendant slot, transit in your 10th house. First of all, I'm going to talk about your health. Saturn is also retrograde. You need to be careful while eating oily food or junk food. I would suggest you stop eating stop junk food or oily food or market food. Just eat homemade food. So your stomach related issue will irritate you. Your backbone related issues will irritate you. Some eyesight related issues will create some problem. Now I'm going to talk about your business and finance. As per your business and finance, your ascendant slot transit in your 10th house, and Mercury is also retrograde from 6th or 7th June to till 22nd of June 2021, and Venus is also transit in Gemini sign till 22nd of June 2021. So this whole combination will create magic at your professional life. If you are unemployed, you will get job. If you are already in job, you will get promoted. A big change you will see in your professional life. If you are willing to invest your money somewhere, this is the ultimate time. You will get money from somewhere, or you may invest anywhere, because this whole month create magic in the terms of your finance, in the terms of your monetary, you can say any type of monetary transactions will make you happy. If you are a businessman, importer, exporter, you will get big order from overseas. You will blessed with a lot of source of earning. You will blessed with a lot of foreign transactions. If you are importer, exporter, you may travel foreign land and get some big order. This whole month create magic at your professional life. Your seniors will be satisfied from your performance. But I would suggest you don't share your secret with your near or dear, with your friends, with your anyone, because other people take advantage from your secrets, from your advice. So try to keep calm in front of your friends or in front of your colleagues. Just follow your path, just do your wonders on your way. You will definitely achieve lot of goals in the month of June 2021. Saturn may retrograde in Capricorn sign, there is no doubt. It will affect on your health. You're feeling bit low and not in a comfort zone. But overall your all pending work will click nicely, because your ascendant slot is in very strong position in your 10th house. Unemployed people will get job. Your finances will be excellent. Your source of earning will develop. You will get name, fame, prosperity. If you are in a administration worker, if you are in a government job, you will blessed with a lot of appreciation. If you are advocate, judge, or IT engineer, or any type of automobile engineer, you will definitely achieve lot of milestones or goals, or you may get promoted during this time. If you are a stockbroker, if you are investing your money in stock market, you will blessed with a lot of gains. Or your old investment will give you a lot of profits. You need to perform your best. Just chant mantra Om Gan Ganapataye Namah, Om Gan Ganapataye Namah, Om Gan Ganapataye Namah, and must visit Lord Ganesha temple every day morning.
Try to visit every day morning, start from the Wednesday morning and offer motichur ke laddu to Lord Ganesha till 43 days regular in the month of June 2021. You will definitely achieve lot of goals. A positive thinking create magic at your workplace. After 15th June, you will be on another height of success. You're feeling much relaxed, comfort. You will get good results from higher authority. You will get very good contacts. You will get new contacts even after 15th June. You will invest your money in business after 15th June. You will enjoy a lot of comforts. You will enjoy a lot of good deeds after 15th June. This whole time create magic in your professional life. 15th June to 30th June, you will definitely achieve big goals. You will enjoy wonderful time with your family and friends, but health of your spouse will be matter of concern. Don't be a part of any arguments at your home. Don't be a part of any type of arguments with your spouse, with your loved one. Otherwise, you will be a part of any problem. Give some respect, show some respect to your spouse. Respect play a big role. Virgo, you just need to perform your best. Think positive. Don't think negative. No one can cheat you. This whole month will bring a lot of positivity, good gains, and your all pending work will click and you will enjoy a lot of comforts. Virgo Ascendus month June 2021. सबसे पहले मैं आपकी हेल्थ की बात करूंगा. अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रख के चलें. ऑयली फूड, जंक फूड ना खाएं. आपकी स्टमक से रिलेटेड ट्रबल हो सकती है, बैक बोन से रिलेटेड ट्रबल हो सकती है, आई साइड रिलेटेड ट्रबल हो सकती है. ये सारा समय आपके लिए कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ला सकता है. अगर हम बिजनेस और फाइनेंस की बात करें तो आपका जो ग्राफ है वो अपवर्ड्स की तरफ है, यानी कि ये सारा महीना बुध ग्रह यानी कि आपके लगन के लॉर्ड 10वें भाव में ट्रांजिट करेंगे. पिता से आपको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलेगा या पिता की ब्लेसिंग्स के कारण आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत शाइनिंग देखेंगे, चमक देखेंगे. आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपके सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होंगे, फाइनेंसेस आपके अच्छे होंगे, पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी आपके अंदर, पॉजिटिव सोच आपकी जो है वो बहुत अच्छी चीज़ें आपके प्रोफेशनल लाइफ में चेंज करेगी. वर्गो, जितने एफर्ट्स डालेंगे उससे 3 गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे. जुपिटर का वक्री होना, सूर्य और शुक्र का कर्म स्थान पर आपके ट्रांजिट करना. 15 जून को सूर्यदेव जेमिनी में जाएंगे आपके 10th हाउस में मरकरी के साथ. उस समय मरकरी रेट्रोग्रेड भी होंगे और वीनस जो है 22 को ज्वाइन करेंगे जेमिनी एंटर करेंगे आपके 11th हाउस में कैंसर साइन में. तो ये डायनामिक्स की जो पोजीशन है, आपका कोई मेजर पेंडिंग काम क्लिक होगा. आपके मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी कि आपका कोई पैसा रुका हुआ है वो आपको मिल गया है, या आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर रहे हो, जिससे आपके फाइनेंसेस जो हैं वो अल्टीमेट रहेंगे. ये सारा समय आपके लिए गुड गेन्स लेकर आ रहा है. ये सारा समय आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस लेकर आ रहा है. आपके बिजनेस कलीग्स के साथ, आपके बिजनेस एसोसिएट्स के साथ लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज लेकर आ रहा है. फ्रूटफुल लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस रिलेटेड जर्नीज लेकर आ रहा है. आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, आप किसी किस्म का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो फाइनेंशियल टाई अप्स इस मंथ में अल्टीमेट रहेंगे, लाजवाब रहेंगे, गजब के रहेंगे. बस आपको ज़रूरत है अपनी परफॉर्मेंस देने की, अपना बेस्ट करने की. जितना परफॉर्म करेंगे, जितना बेस्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा बड़ी उपलब्धि, उतनी ज़्यादा बड़ी आपको सक्सेस ये आपको नसीब होगी. और ये सारा समय आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, रिवार्ड लेकर आएगा. नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी में वृद्धि होगी. लगन का लॉर्ड आपके 10th हाउस में. तो एक एमरल्ड आप ज़रूर डालें. राइट हैंड रिंग फिंगर, नॉट इन लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर में आपने एमरल्ड डालना है. इसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा. कैरेट होना चाहिए आपके बॉडी वेट और आपके मरकरी आपका कितने डिग्री का है आपके बर्थ चार्ट में. बट यू मस्ट वेयर एमरल्ड राइट हैंड रिंग फिंगर इफ़ यू आर वर्किंग मैन. And if you are working woman, then you can also wear emerald in gold right hand ring finger. And if you are homely woman, then you can wear emerald left hand ring finger. गणेश भगवान की उपासना करें. मोतीचूर के लड्डू भगवान गणेश को ऑफर करें. 43 दिन लगातार आप गणेश जी के टेंपल में जाएं और हर बुधवार को उनको मोतीचूर के लड्डू ऑफर करें. ये सारा समय आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपकी हेल्प करेगी और आपका सोलर सिस्टम से जो आपको एनर्जी मिलेगी उससे आप गज़ब की तरक्की करेंगे. ये सारा समय जितनी पॉजिटिव सोच रखेंगे, जितना ज़्यादा बड़ा सोचेंगे, उतनी बड़ी अचीवमेंट आप हासिल करेंगे. I'm looking forward to your great success. Thank you for watching my video. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.